guys, welcome to my channel. My name is Karuna. I hope you guys are at home, keeping it sane and eating healthy and not going cuckoo about it. So in today's video, I will be sharing with you guys one healthy recipe. Yes, so I will be making Gulab Jamuns at home without maida. So I hope you guys enjoy this video, and if you do, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified every time I upload a new video. And without further ado, let's get into today's video. गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ लीटर फुल फैट मिल्क लिया है एंड आप इसे कंटिन्यूअस चलाते रहें एंड कीप रिमूविंग द मलाई फ्रॉम इट्स साइड्स एंड कीप स्टिरिंग वेल. साइड बाय साइड हम चाशनी बनाएंगे एंड फॉर दैट वी विल नीड 1.5 ग्लास ऑफ वाटर और उसमें हम हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा शुगर ऐड करेंगे एंड फॉर 10 मिनट्स इसे चलाएंगे. एंड आप इसमें ना इलायची भी ऐड कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर. जब तक मिल्क कुछ ऐसे थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आता तब तक मीडियम फ्लेम में चलाते रहें एंड देन कीप इट असाइड टू कूल डाउन. सो नाउ खोया को हम एक बाउल में ले लेंगे एंड वी विल ऐड 2 to 3 स्पून्स ऑफ होल व्हीट फ्लावर और आटा इनटू इट एंड वी विल देन ऐड 1 tablespoon ऑफ पाउडर शुगर एंड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा इनटू इट एंड सम गुलाब जल ऑफ कोर्स. And don't shy away to use your hands out here, and as required add some more atta and mix properly using this technique. Make a proper dough out of it, add ghee and mix well. Now divide the dough and make circular balls out of it. Rub between your palms and make smooth balls out of it. So now we will fry them at low heat. Drop all the balls and keep stirring the oil. When the color turns out beautiful brown, take them out and soak them in the hot chasni which we have made earlier and let them rest for 20 to 30 minutes. And then enjoy them, and I'm sure you will love it. They look delicious and taste super delicious. So with that, I hope you guys enjoyed this video. Do try this out and share with me the Gulab Jamun, of course. Please like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.